Hello everyone. So today we will start a most important chapter, that is light, ray optics. 10th CBSE, 9th ICSE रे ଗୋଟେ important chapter. 10th ରେ ତ CBSE ରେ ଅଛି ଆମର light, reflection, laws of reflection, refraction, everything. ଯୋଉଟା କି ICSE ରେ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି 9th ରେ ଅଛି reflection and refraction part ଟା and ଟିକେ higher version everything ସବୁ ଯାକ 10th ରେ ଅଛି. So first of all जो मैंने 10th refraction हमें another video भी prepare कर सकते हैं everything. It will both covered for board and Olympiad and other competitive exam also. ठीक है जी. Then next come to the concept. ठीक है जी. First of all, what is light? I mean the Selena, Ariane, Esan, everything. किसी publication follow करने में पड़ेगा ना, everything will be covered. गोटे भी point किसी हमें miss करिवा नहीं. हमें try कर अब जहाँ doubt रहेगा. Next को part रे को chapter दरकार तो comment रे भी कर दो. Next come to the reflection of light. Reflection of light. ठीक अछि. ICSE मो सबले पई कोई ऑफलाइन आ ये तो सेना की मोस्ट प्रिफरेबल कैरियर पई तो ठीक है हायर लेवल कले तो माने इजी हो तो माने सॉल्व करिवा पई. नाउ कम टू द व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्लेक्शन? थ्री टर्म तीनटा टर्म में एट अ टाइम दे बुझे चेष्टा करिवा. वन फर्स्ट टर्म इज रिफ्लेक्शन, अनदर इज रिफ्रैक्शन, another one is absorption, another one is diffraction. अब अधिक जीवन है till now it is more than enough. First of all most important thing, what is reflection? मु ट्रस्ट वाली बोर्ड को तो किछि लाइट कौन वाला ना तीनटा जिनिस वाला. as it is board is a opaque object, there is three type of object. one is opaque and transparent and this translucent. opaque माने कौन? completely, it completely blocks the light. ये लाइट को पूरा ब्लॉक कर दो, just like wall board. लाइट पास ही कर पाइबे. लाइट can't pass completely 99.9%. that means you can say completely block कर दो, completely block. ट्रांसपेरेंट माने कोन? पूरा completely पास करथो. 99.9% light can be passed pass कर पड़े तो completely pass कर दियो, pass कर दियो. ठीक अछि. Translucent means what? This is semi transparent. You can say that semi transparent. Translucent means semi transparent. That means what? It depends, it varies from substance to substance. Example oil paper नहीं जे हमें oil paper translucent example. Transparent example कौन है परिया? glass है गला. opaque object कौन है गला? wall है गला. ये बोर्ड है गला, ब्लैक बोर्ड है गला, और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड तो एक्सेट्रा. जोटा कि कंप्लीटली लाइट रे को कोन करूची? ब्लॉक कर दोची. दिस इज योर ओपाक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट. नाउ नेक्स्ट कम टू द ए रिफ्लेक्शन हुए केते बले. रिफ्लेक्शन तीनटा केस रे, बोथ ओपाक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट. बट रिफ्रैक्शन ओनली ट्रांसपेरेंट रे हुए, ट्रांसलूसेंट रे. देन नेक्स्ट है absorption, diffraction. absorption भी तीनटा केस रे, diffraction भी पढ़ियो गोटे टर्म. First of all, reflection कौन? What is reflection? Reflection means that is your reflection. In one word you can write that bouncing back of light. मु टॉर्च पकेनी, टॉर्च गला तार लाइट रे गला सेठी बाडा ही आसी मो मुहरे पड़ला कि सेम वीडियो को पळे आसला कॉला से रिफ्लेक्शन. मैं कहबा डेफिनेशन everything I will mention. The reflect bouncing back of light. और बोर्ड को सर हम जति लिखे नी बोर्ड ठीक हो जामे लिखिबा तो हमें केमती को लिखिबा. when
लाइट रे जेतेबेले लाइट रे जाउची गोटे ओपाक सब्सटेंस ओपाक मटेरियल ले बाडे हे कि सेम मीडियम को आसुची आमे कोन कहबा रिफ्लेक्शन हैला दैट मींस व्हेन लाइट रेज transform from one medium to one medium and it strikes with an object after strike or after bombardment if light rays bounce back to the same medium then it is called as reflection. That's why it is called bouncing back of light. When light rays coming from one medium after striking with a surface reflected back to the same medium called as reflection of light ROL reflection of light. Sir, then what is refraction? Shortcut रे गोटे आउटे वीडियो प्रिपेयर करछ देखिबो. Refraction होछि bending of light. This is bouncing back of light, this is refraction, this is bending of light. Then sir, what is absorption? When light energy neither is created nor be destroyed. तो ये गोटे एमिति पॉइंट मन रखिदिबो ताकू केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो उथरे भी लिखिले गोटे माने को कहले तम आंसर राइटिंग रे गोटे माने को कहले तो पॉजिटिव इंपैक्ट पकाए. Energy neither created nor destroyed. So when light is also a form of energy. First of all, what is light? Light is also a form of energy. Light is also a form of energy. And so देखिए हमें light is also a form of energy. Light is also a form of energy. तो mind it. तो light is ଗୋଟେ energy ହେଲା. When light travels and strikes with a medium, then three things happens. Basically, two things. First of all, absorption. Some portion of light absorbed by the particles or molecules of that substance. That is called as absorption of light. And if the object is opaque, then some portion of light bouncing back to the same medium. Then it is called as reflection. And if the object is translucent or transparent, then some portion of light travel to another medium or passes through another medium with some angle instead of going through its original path. Refraction I already explained korichi, definition everything mention korichi. Don't worry, that is called as a refraction. Is that clear or not? Then next come to the I'm as a light. अब जब लाइट के प्रॉपर्टी देखिए, लाइट हैज डुअल नेचर. लाइट है डुअल नेचर ऑफ लाइट. एल्सो आगु बहुत दरकार हो डुअल नेचर कौन कहला? गोटा होची पार्टिकल नेचर, गोटा होची वेव नेचर. पार्टिकल नेचर अनदर वन इज वेव नेचर. ठीक अछि, आगु बढ़िया. वेव नेचर कौन काम, पार्टिकल नेचर कौन काम. शैडो फॉर्मेशन कौन पाई होउची तुमको आसीबो. फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज ड्यू टू व्हिच नेचर ऑफ लाइट? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. माइंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन occurs due to which nature of light? Wave nature of light. That means light travels in both the types, both medium, both types. It particle, but a particle can be movement करे. The light it travels always in rectilinear path. Just like particle always travels, light travels always in rectilinear path. Rectilinear path. तो सर ये rectilinear path कौन? Rectilinear माने straight line. Light is सबले another point. लाइट सबले स्ट्रेट लाइन में मूव करे. क्वेश्चन আছে ओलंपियाड
आलन फालन जो माने हमर फाउंडेशन दे नो थु आईआईटी नीट पे छोट नो तो कजरी 8 7 8 तो नो छु त माने देखि दिबो जे गोटे मोमबत्ती जळुची गोटे कैंडल एटी जळुची गोटे कैंडल एटी जळुची तो वी कांट सी दैट कैंडल थ्रू ए बेंड पाइप वी कांट due to which property of light due to rectilinear property of light that light can always travel in rectilinear path so the light does not have ability to bend that's why we can see here we can see if here is your eye let's suppose this is your eye you are watching you are trying to watch this candle light but you can't if some portion of light you can see then due to reflection internal surface internal a pipe ro internal surface is amar kona TIR आगु पड़िया total internal reflection internal reflection बार बार हे टिके हल्का लाइट देखा छै but you can't see actually due to the property of rectilinear path light always travel always in rectilinear path and that is due to particle nature of light. Then next come to wave nature. Another point, next point कर लिखो दियो समझ. Another point, wave nature. हमें रिफ्रैक्शन में पढ़िया. रिफ्रैक्शन वाले वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी तो मैं देखि देबो जाय कि जे होय त देखि दिबो गोटे कंटेनर रे वाटर तो आइछि गोटे बाड़ी तो आइथिबो. से बाड़ी ता बंका देखाउथियो मोटा देखाउथियो. स्लाइटली डिस्प्लेस देखाउथियो थिक देखाउथियो. Reason what is the reason? The main reason is refraction and refraction occurs due to wave nature of light. Is that clear or not? Okay. This is the light introduction and everything point. Now next come to the regular reflection and irregular reflection. Next come to the regular reflection and irregular reflection. Duster, there is duster. Regular reflection. अच्छा तो सर व्हाट इज डिफ्रैक्शन अपन तो कहले डिफ्रैक्शन ते इंट्रोडक्शन दे दे हमें डिफ्रैक्शन कौन तो डिफ्रैक्शन हो कोन बेंडिंग ऑफ लाइट तो सर एबे अपन लाइट सीधा ट्रैवल करे हम कोन बेंडिंग ऑफ लाइट ये की কথা আমি পাঠশালা পড়ি বলি না পড়াবে পাঠশালা না পড়লে কেন কম পাঠশালা না পড়লে কোন কেন হবে এই দুনিয়ার সব জিনিস को तमे प्रोटेक्ट करियो पाठ गोटे वाला जिंस जा पाठ नॉलेज ज्ञान ये तुमको प्रोटेक्ट करबा अछि तो डिफ्रैक्शन कोन तो डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट if this is a source of light now if a small particle present small object present in front of source of light then light that if you will put a screen here then light travel in a straight line at this point it slightly bend and create a faded shadow at the screen in the screen so that's bending nature is called slightly bending nature is called a diffraction. ओके ता भीतर का हम जीवन जे शैडो कहा पर डिपेंड करे डिस्टेंस कोन केमती कोन तार इंटेंसिटी हम धीरे धीरे हायर लेवल जीबा डोंट वरी हैला ठीक अछि ओके देन नेक्स्ट वन रेगुलर रिफ्लेक्शन irregular reflection ठीक अछि रेगुलर रिफ्लेक्शन irregular reflection is two types one is regular another is irregular regular reflection कौन है regular reflection can be happen only in a plane surface uniform surface और plane surface है reflection angle of I angle of R for example ये parallel beam यदि ऐसे एमती पड़ेगा तो एमती आराम से जीव सब जगह this is all your incident ray this is reflected ray माने तमे भाव करे सांग एक दिन जड़े पुटू तो फॉर एग्जांपल लेट हला मनत सुश्री हमर तपस्वी तीनटा नेम गला तो तीन जण लाइट पकाउछनी एठी दर के असली सत्य
शुभ्रजीत आउ किए धर रोहन तो एमाने ऑब्जर्व करे पूरा परफेक्टली पड़ियो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर पासियो हम दिस इज लेट्स सपोज इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो लाइट एतर तो पकोउ एठी धर काव्यांश पकोउची आउट एतर के पकोउची प्रार्थना पकोउची ठीक अछि ये रिफ्लेक्शन टा आ रिफ्लेक्शन एमिति गला को ये रिफ्लेक्शन एमिति जीवन आउट रिफ्लेक्शन एतर एमिति एठी पडुथिबो से आडू पळेबो तो ये पकेला दर्शिका ये ला काव्यांश ये ला प्रार्थना ये दर्शिका पकोउची तो एठी जाके पढले मन इच्छा हो but regular pattern they will not follow a regular pattern this is all about regular and irregular reflection introduction everything छोटो छोटो जो कहली मु एथिरु एमसीक्यू एंड कॉन्सेप्चुअल ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन फ्रेम हम देन आमे आसीया कोन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक अछि एथि कि सरला देन नेक्स्ट कम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोन आउ गोटे तो आम देखिए नेक्स्ट कम टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ए जो रिफ्लेक्शन होची जिंस कौन लेट सपोज दिस इज ए प्लेन मिरर ऑलवेज वन थिंग माइंड जते बेले मिरर ड्रा करिवो यू हैव टू ड्रा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रा करे बाद अदरवाइज मार्क विल डिडक्ट कंपल्सरी मार्क विल डिडक्ट व्हाई because if you don't draw the reflecting surface then it will act like as a transparent medium and it will never show reflection it will show refraction instead of reflection ये reflection not that refraction no property show karibo so that's why you have to draw reflecting surface and shaded region that means ये मिरर हेले ऊपर टच रिफ्लेक्टिंग सरफेस पछपटा कोन कोटिंग दिया अछि तो कमेंट रे को समझते मिरर रे को कोटिंग दिया जाय थाए मिरर रे पछपटे से केमिकल फार्मूला रे नेम कोन समझ एवरीबॉडी कमेंट एवरीबॉडी तो नाउ if some incident ray falls on this point this is I then you have to draw normal sir how we can draw normal the point at which incident ray falls on the surface that point is called as a point of incidence mind it बुझा पड़ला जो पॉइंट रे इंसिडेंट रे आसी के पड़िबो सब्सटेंस को टच करिवो सेही पॉइंट के हम कहया कोन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखि दो चाहते दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डेफिनेशन की दरकार नहीं तो माने कहली लिखि भी पाइबो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस this is point of incidence point of I and this is your incident ray this is your I ray now draw a normal sir what is normal we know that math to man pade I already taught you that normal means 90 degree right angle to that point to that surface to that point or to that surface to that point at this surface a point to 90 degree draw kare this is my normal now you can see here I can draw here this is my normal this is my 90 degree this is my normal okay now we do it we draw now reflected reflection reflected this is your reflected ray R ray or reflected ray and the angle made by incident ray with normal I repeat angle made by incident ray is called as incident angle this is your I incident ray normal सहित जो angle बनेइबो क्रिएट करिवो से angle को कोन कहबा incident angle रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से तो जो एंगल बने बता कौन कहबा रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड एंगल दिस इज योर R now I repeat this is incident ray this is incident angle this is normal this is point of incidence
this is reflected ray, this is reflected angle. Now next come to the laws of reflection. This is very important. There is two laws. Laws of reflection. Laws of reflection. हाँ डेफिनेशन कह तुमको कौन कली लिखिदेली है आउ जो मान डेफिनेशन ये भी मोर चैनल को जॉइन कर देबो व्हाट्सएप चैनल को सेतिर सदा डेफिनेशन नो पीडीएफ भी मु अपलोड कर देथि ठीक अछि अदरवाइज चैनल को फॉलो कर देले सेतिर मु अपलोड कर देथि अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कर दोछि मु प्रोवाइड कर देथि किछि कथा नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉज 1 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन the incident ray reflected ray normal and point of incidence should be lie on a same plane गोटिए प्लेन रे समस्त रहिबा दरकार that is I ray incident ray reflected ray point of incidence I sorry p I point of incidence and normal capital A normal should lie on same plane must ये समझते गोटे प्लेन रहिबा दरकार रूल नंबर 1 देन लॉ 2 रूल नंबर 2 angle of incidence I equal to angle of reflection R this is all about plane mirror you can say that this is a plane mirror ठीक अछि this is laws of reflection is that clear or not तो सर प्लेन कौन bring me water okay is that clear or not question what is a plane plane means पृष्ठतल plane means पृष्ठतल plane is the surface which contain both incident ray reflected ray normal is that called as plane of reflection of plane सही plane रे reflection होची ओडे मिरर मु एमति थोइली टॉर्च टा पकेली रिफ्लेक्शन हेकी गला तो आमे कोइ मु सेटा कोइ मु रिफ्लेक्शन नो प्लेन रिफ्लेक्टिंग प्लेन कोइ मु सेटा प्लेन जो प्लेन रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल कंटेंट करथि एति की क्लियर होला ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मिरर रिफ्लेक्ट 99.9% 90 nothing is 100% in this world mirror reflect 99.9% of the light is that clear or not okay